Hi investors, welcome to School of Intrinsic Compounding. So in today's video, we'll be analyzing the CDMO and the CRAMS industry. And linked to the CDMO and the CRAMS industry, we'll be doing a business analysis of Syngene. Because our CDMO and CRAMS industry पे बहुत ज़्यादा tailwinds आ रखी हैं. तो what are tailwinds? Basically tailwinds help investors compound their wealth at a faster rate. जो काम 5-6 साल में होना होता है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में घुस गए जहाँ पे tailwinds है, तो वो काम सेम 2-3 years में ही हो जाता है. तो at SOIC we believe in studying companies or industries which have a lot of tailwinds. So linked to this, we have divided this video into two parts. In the first part of the video, we'll be talking about the CDMO industry and the CRAMS industry कि इस इंडस्ट्री की नीड क्या है आज. And in the second part, we'll be talking about Syngene business analysis. Because in our opinion, Syngene cannot be understood without understanding the CRAMS and the CDMO industry. So guys, before I start with the business analysis and the industry analysis of CDMO and Syngene, I would like you to focus on a very interesting mental model. What is the name of the mental model? It is basically critical mass. तो क्रिटिकल मास है क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू आर गिवन सीड्स ऑफ अ फ्यू चाइनीज बैम्बू ट्रीज, राइट? तो व्हाट विल हैपन इज कि यू विल बी वेरी पेशेंट विद देम. आप 4 साल के लिए उसमें पानी डालते रहोगे, यू विल बी फर्टिलाइजिंग द सॉइल, यू विल बी डूइंग एवरीथिंग एल्स, बट फॉर 4 years देयर वुड बी नो ग्रोथ इन द ट्री, राइट? वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, बेसिकली इट रिमेन्स विद इन द ग्राउंड एंड देयर इज नो विजिबल रिजल्ट्स टू बी सीन. But what happens in the 5th year, it is absolutely mind-boggling. So within a short span of 6 weeks, your process brings you to the outcome. Within a matter of 6 weeks, the Chinese bamboo seed grows into a tree, and that tree goes up till the height of 90 feet. That too within a short span of 6 weeks. So today, many CDMO and CRAMS players, in our opinion, are at that stage of life. Syngene might be one of them, which is at that stage of life. So with this, let's start with the CDMO and CRAMS industry analysis. Let's analyze the value chain of the entire CDMO and CRAMS industry. तो CDMO और CRAMS इंडस्ट्री आई क्यों थी, उससे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेटर्स की, एंड उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ ड्रग डिस्कवरी. सो बेसिकली इन नेचर देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस, राइट? सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस बीइंग कॉज्ड बाय वेरियस प्रोटीन्स. तो उसकी वजह से वी नीड कंसिस्टेंट R&D बाय द ग्लोबल इनोवेटर्स. अब ग्लोबल इनोवेटर्स कौन है? दीज आर योर कंपनीज लाइक नोवार्टिस, सनोफी एंड फाइजर. सो दीज गाइज आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन न्यू ड्रग्स. तो यहाँ पे these guys are spending close to 20 to 22% of their sales on R&D. So they are spending a lot of amount on R&D. And what is the entire value chain of the drug discovery process? So basically scientists are working in labs. So scientists labs में work कर रहे होते हैं and they are always looking for new diseases. And जो new diseases आ रही हैं उसके लिए they keep on finding compounds which can combat that disease. So this is what the value chain of drug discovery process looks like. So basically there are 4 phases. So first phase of drug discovery process is the discovery process. Second stage is development process. Third is the manufacturing process, and the fourth stage is commercialization process. So let's start talking with the discovery process. So basically in the discovery process what happens is कि आपका कोई भी जो disease है जो naturally occurring है, तो उसके अगेंस्ट साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड लाइक प्रोटीन जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, एंड टू लाइक combat that protein or to combat that disease, scientists are looking for compounds. तो scientists like run a search for close to 10,000 compounds, और उसमें से I think so कुछ 5,000 या 6,000 compounds के आसपास ही हिट में आते हैं. तो बेसिकली पहले लीड आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर टारगेट वैलिडेशन होता है इसमें. So this is what the discovery process is. And moreover इसके अंदर हम टारगेट की वेरिफिकेशन भी करते हैं. So this is what the first process is. And usually the entire process of drug discovery to commercialization takes somewhere close to 12 to 15 years. तो पहले हम ड्रग डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जब लीड आ जाती है, जब लीड ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, लीड सिलेक्शन हो जाती है, देन वी कम टू योर क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली द ड्रग इज टेस्टेड इन विट्रो एंड इन वीवो. तो व्हाट इज इन विट्रो? बेसिकली द ड्रग इज टेस्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट?
एंड व्हाट इज इन विवो? तो बेसिकली जैसे हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है, काफ़ी सारे साइंस फिक्शन सिटकॉम्स में देखा है, तो जो हम रैट में जो टेस्टिंग देखते हैं, तो बेसिकली इन विवो इज विद इन द लिविंग। तो ड्रग की जो टेस्टिंग है वो विद इन द लिविंग होती है, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट टू फाइंड आउट हाउ द ड्रग रिएक्ट्स विद द लिविंग बॉडी, राइट? And after this stage is completed, this stage is known as preclinical. So after this stage is completed, we come to the clinical trials. So now your clinical trials are divided into 3 phases. So your phase 1 is like phase 1, and second is your phase 2, and the third is your phase 3. So in the phase 1 of clinical trials, 80 to 100 healthy volunteers are selected. And clinical trials का main purpose क्या है कि we need to know how the drug reacts within the human body. तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि 80 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स आर चूजन, एंड इन हेल्दी वॉलंटियर्स का पर्पस क्या है? जस्ट टू फाइंड आउट हाउ द ड्रग रिएक्ट्स विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ फेज 1 से लेके फेज 2 तक ड्रग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? इट इज समवेयर क्लोज टू 63%, कि आपका ड्रग फेज 1 से फेज 2 तक 63% ऑफ द टाइम्स ट्रांजिशन कर जाएगा। सो दिस इज ऑन द वेरी हाई साइड ऑफ थिंग्स. Now in the phase 2, this is where the real difficulty happens. So over here 100 to 300 volunteers are selected who are not so well, जिनको कोई बीमारी है या जिनको कोई डिजीज है, एंड उन वॉलंटियर्स को ये दवाई दी जाती है, राइट? द ड्रग इज गिवन टू दीज वॉलंटियर्स, एंड यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज समवेयर क्लोज टू 30 to 31%. तो ओवर हेयर द चांसेस ऑफ ड्रग फेलिंग आर रियली रियली हाई, बिकॉज फेज 1 में तो हम देख रहे थे कि ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए फिट फॉर कंजम्पशन है या नहीं है. सेकेंड फेज में हम एक्चुअली में देख रहे हैं कि क्या इस ड्रग की कोई एफिकेसी है या नहीं है, क्या ये ड्रग एक्चुअली में काम करता है या नहीं है. तो फ्रॉम हेयर देन वी गो टू द फेज 3. अब phase 3 में we get to know the entire like volunteer pool expands from like 100 to 200 to 1000 to 5000. Worldwide clinical tests are conducted, and over here the usage of the drug expands by 10x, right? So in the third phase we get to know whether the drug would go into the commercialization stage or not. And the probability of success of the drug passing from phase 3 to NDA basically a new drug application होता है, तो 58% के आसपास यहाँ पे probability है. And NDA में क्या होता है, basically your जो regulators है they approve the drug whether the drug is safe for human consumption or not. Who are the regulators? Basically something like your US FDA, that is United States Food and Drug Administration. तो ये drug की सारी जो भी regulation होती है ये लोग देखते हैं. different countries में different regulators हैं. And from over here, from the regulatory stage to the commercialization stage, जब वो market के अंदर आ जाता है, तो over there the probability of that happening is close to 85%. Now guys, if we just take all the probabilities of the drug being commercialized, of the molecule being commercialized from phase 1 to commercial stage, the probability is somewhere close to 9.6%. माने अगर 100 molecules आते हैं आपके phase 1 में, तो end तक सिर्फ 9.6 molecules ही commercialize होंगे, वो in the form of like coming into the markets, right? So this is what the entire drug discovery process looks like. Now over here, what are the problems? The biggest problem over here is that the returns on R&D for the global innovators have been falling in the last decade, क्योंकि पेटेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है जेनेरिक्स का. एंड मोर ओवर गाइज, जस्ट थिंक अबाउट दिस. सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल फेज 3 के अंदर आ चुका है एंड यू आर अ ग्लोबल इनोवेटर, से यू आर फाइजर, राइट? फाइजर इज अ ग्लोबल इनोवेटर. सपोज योर मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी इन फेज 3 एंड यू हैव ऑलरेडी सेटअप अ प्लांट फॉर इट, कि आपको लग रहा है कि वो कमर्शलाइज होने वाला है, तो इसलिए आपने उसके लिए प्लांट लगा लिया है. बट ऑल ऑफ अ सडन वो फेज 3 से रेगुलेटरी स्टेज तक नहीं आ पाता, बिकॉज इन द फेज 3 ऑफ द ट्रायल्स योर ड्रग फेल्स. So what happens to the facility that you have set up? So that facility becomes redundant. तो basically वो facility आपकी खराब हो जाती है and आपको वहाँ पे loss हो जाता है. So guys, this is where the need of CRAMS and CDMO industry arose. क्योंकि CRAMS और CDMO players क्या कहते हैं कि you just outsource us the drug. तो CRAMS एंड CDMO पे आने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड बारे में बताऊंगा जो इंडस्ट्री में इस टाइम पे चल रहा है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज सिंजीन्स बिजनेस. तो एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो ग्लोबल इनोवेटर्स की R&D पाइपलाइन है, जो माने फाइजर, सनोफी, नोवार्टिस आज R&D कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चेंज हुआ है, उसके अंदर शिफ्ट हो रहा है, वैल्यू माइग्रेशन चल रही है. So from chemical entities, the shift is happening to biological entities. So your question would be, what are chemical entities and what are biological entities? So suppose करते हैं आप जो क्रोसिन खाते हैं, तो that is made through the help of a chemical reaction. So that is a chemical entity, right?
बायोलॉजिकल एंटिटीज आर समथिंग लाइक योर वैक्सीनेशन। आपने देखा है जब भी किसी भी अंडर एज चाइल्ड को या कुछ 4 या 5 जो 4-5 साल का बच्चा होता है, जब भी उसको वैक्सीनेशन लगती है, सो द किड फॉल्स डाउन विद फीवर, बिकॉज वॉट हैपन्स इन वैक्सीनेशन इज दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन इंसर्टेड इन योर बॉडी। वायरस या फिर माइक्रोब का बहुत एक वीकेंड फॉर्म आपकी बॉडी में जाता है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि इससे डील कैसे करना है। बिकॉज अ लिविंग थिंग इज गोइंग इनटू आवर बॉडी, अ लिविंग माइक्रोब इज गोइंग इनटू आवर बॉडी, दैट इज टर्म्ड एज बायोलॉजिक्स। तो आज अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड में जो टॉप 10 सेलिंग ड्रग्स में है उसमें नंबर 1 इज हुमीरा। एंड व्हाट इज हुमीरा? हुमीरा इज बेसिकली अ बायोलॉजिक। तो out of top 10 selling drugs, 8 are biologics, and in next 5 years it is expected that 50 to 55% of the R&D pipeline of the global innovators would be of biologics. तो chemical से shift चल रहा है towards biologics, and इसके पीछे एक बहुत valid reason भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की बॉडी में बेसिकली the chemical drugs do not like match, तो बेसिकली adverse reaction हो जाता है। एंड बायोलॉजिक्स का क्या है, तो वेरी नीच डिजीजेज एंड जहाँ पे डिजीज़ को मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसको कॉम्बैट करना मुश्किल है, उसके लिए बायोलॉजिक्स का यूसेज हो रहा है। बेसिकली माइक्रोब्स को मॉडिफाई करके आपकी बॉडी में डाला जा रहा है। दिस इज व्हाट बायोलॉजिक्स आर। एंड बायोलॉजिक्स का जो मोड ऑफ डिलीवरी है दैट इज थ्रू इंजेक्टेबल्स, माने इंजेक्टेबल के थ्रू ये आपकी बॉडी में डाल सकते हैं, नॉट थ्रू द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्टेरॉइड जो हम आपके केमिकल के अंदर देखते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, बिकॉज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, जब अगर हम CDMO और क्रैम्स की बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिक्स का पाइपलाइन में ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, इस वजह से CDMO और क्रैम्स जो बायोलॉजिक्स की तरफ फोकस्ड हैं वो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकता है। सो गाइस दिस वाज अ ले ऑफ द लैंड। तो अभी हमने इससे पहले बात करी थी कि अगर आपने एक्स्ट्रा फैसिलिटी लगाई एंड आपकी फैसिलिटी गोज फॉर अ टॉस बिकॉज आपका मॉलिक्यूल ही फेल हो गया R&D में, तो व्हाट विल हैपन? आप मतलब यू विल इंकर हैवी लॉसेस। सो दिस इज व्हाई द नीड फॉर क्रैम्स एंड CDMO इंडस्ट्री इमर्ज्ड। अब क्रैम्स एंड CDMO इंडस्ट्री में भी 2 पार्ट्स हैं। एक आपका पार्ट है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर एक आपका पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ये आपको डिस्कवरी सर्विसेज में हेल्प करती हैं और यहाँ प्री क्लिनिकल सर्विसेज में हेल्प करती हैं। तो जो भी आपकी इन एनिमल टेस्टिंग है, जो भी आपका टारगेट वैलिडेशन है, कोई भी आप मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हो नेचर में, उसमें आपको CRO हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेयर जो CMO है या CDMO है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दीज गाइज विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द प्रोसेस कि ड्रग को मॉलिक्यूल को स्केल अप कैसे करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होएगी, राइट? एंड these guys will also help you in manufacturing the drug. Guys, now currently the CDMO and the CRO industry, both of them have a very big opportunity size for the Indian players. The CDMO industry is valued at close to 63 to 64 billion dollars and it continues to grow at 7 to 8%. तो माने 2026 या 2027 तक the industry size can double. Whereas the CRO industry, जो contract research organizations है, even that industry is growing at 7 to 8% and even that industry is expected to double by the 2026 and 2027. So guys, this was a brief overview of the industry. Now coming to why there are tailwinds in the industry right now. So first reason for tailwinds, if we look at the biopharmaceutical spend or if we look at the venture capital funding, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि वर्चुअल स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो दीज आर योर स्टार्टअप्स जिनको लगता है कि वी कैन डू समथिंग, वी हैव एन आइडिया अबाउट अ कंपाउंड। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर आउटसोर्सिंग देयर ड्रग डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टू CRO and CDMO players. So this is the first trend, and as we can see, the venture capital funding to these guys have been increasing over a period of time. What is the second trend? The second trend is the returns on R&D are falling for like your large pharmaceutical companies. So to cut cost, to optimize cost, these guys are increasingly outsourcing the drug discovery, development and manufacturing services. What is the third trend? The third trend, which is the most important trend, जो हमें इंडिया में काफ़ी सारे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट स्टोरीज में दिखता है, that is the trend of low cost. दिस इज लिंक टू अगेन लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिंजीन की कॉन्फ्रेंस कॉल में वी हर्ड, सो द एवरेज सैलरी ऑफ एन इंडियन साइंटिस्ट इज समवेयर क्लोज टू $60,000 per year, whereas in China this is close to $100,000 per year.
बट इफ वी कंपेयर दिस टू योर वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस एंड यूरोप में है, ओवर देयर द एवरेज सैलरी ऑफ अ साइंटिस्ट इज समवेयर क्लोज टू $175,000. So why do we see a trend? This is one of the major reasons. The capable players who are providing a low cost service base will eventually win out in each and every industry. This can happen here too. तो हमारा जो IT एक्सपोर्ट ग्रो हुआ था इंडिया का in the 1990s, that was on back of lower costs. 2005 onwards we grew in the pharma industry. That was also on the back of lower costs. Textile exports also did well because that was also on the back of lower costs, but eventually Nepal and Bangladesh ate away India's pie. So next industries which can do well on the basis of lower cost and capability of Indian players is CDMO and your chemical industry. Chemical industry की बात नहीं करें, CDMO की करेंगे. तो और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है इस इंडस्ट्री में, जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि योर CDMO इंडस्ट्री इज अ वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. सो ओवर हेयर देर आर क्लोज टू 500 to 600 प्लेयर्स. तो काफ़ी क्वेश्चन आता है कि अगर हम वॉरेन बफेट की फिलॉसफी पढ़ते हैं, इफ यू लुक एट हार्वर्ड मार्क्स, तो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री शुड बी एन इंडस्ट्री जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं. बट ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोबल इनोवेटर है, समथिंग लाइक योर फाइजर और समथिंग लाइक योर सनोफी, दे विल ओनली सिलेक्ट 1 or 2 वेंडर्स. तो येस, द इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड ऑन एन इंडस्ट्री लेवल, बट इट इज कंसोलिडेटेड ऑन अ मॉलिक्यूल लेवल. माने आपके एक मॉलिक्यूल का कॉन्ट्रैक्ट 2 या 3 वेंडर से ज्यादा को नहीं मिलेगा, बिकॉज ग्लोबल इनोवेटर्स डू नॉट वांट टू डील विद मोर देन 1 or 2 वेंडर्स, राइट? So this is why it is a very consolidated industry. And moreover, there are 3 kinds of CRAMS and CDMO player in the entire industry. So which is the first kind of CDMO or CRAMS players? These are your players who have unique technology. तो niche technology abilities possess करते हैं. Something like your Suven Pharmaceuticals, which has a technical know of CNS CRAMS, माने central nervous system के CRAMS का, right? Second are your CDMO or CMOs, which are capacity consolidators. So these are your companies like Piramal or Strides Shasun, right? So these guys do a lot of acquisition, and जो capability इनके पास नहीं होती CDMO इंडस्ट्री में, तो ये उसको acquire करने की कोशिश करते हैं. And third type of your CDMO and CMO players are your vertically integrated players. So these guys are the most interesting guys because these guys are integrated from CRO to CDMO. माने कि ये players क्या कर रहे हैं कि ड्रग डिस्कवरी से लेके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तक सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इन अ वे दिस इज लाइक अ हिडन प्लेटफॉर्म. So we also like to call Syngene a hidden platform because Syngene falls under the category of vertical integration. Now the question arises that how do CRAMS players make money? So basically, again, if we look at the value chain, what happens is in the discovery services, the CRO players and the CRAMS players, they get to make a revenue of somewhere between $0.5 million to $2 million. माने 4 से लेके 15-16 करोड़ के बीच का रेवेन्यू बना सकते हैं. और जैसे ही मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड करता है फेज 1 और फेज 2 के अंदर, तो इसको जैसे हमने सुवेन फार्मा की वीडियो में देखा था, जो आप देख सकते हैं, जब हमने बेस क्रैम्स की बात करी थी, तो ये बेस क्रैम्स होता है. यहाँ पे इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज की सप्लाई होती है. एपीआईज क्या होते हैं? बेसिकली आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाई के अंदर सॉल्ट डलता है. तो यहाँ पे रेवेन्यू की पोटेंशियल कुछ $2 to $6 million के बीच में, यानी 14 to 50 करोड़ के बीच में. बट द मोमेंट योर मॉलिक्यूल enters from phase 2 to phase 3, what happens is that your potential of revenue increases by 10x. तो यहाँ पे $15 million से लेके $50 million तक की पोटेंशियल है, यानी 100 करोड़ से लेके 350 करोड़ तक का पोटेंशियल है यहाँ पे, 350 to 400 करोड़ का. सो दिस इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग दैट CRAMS इंडस्ट्री इज अ नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल. तो सिंजीन का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वर्ल्ड में, द नेम ऑफ द कंपनी इज वूशी एप्टेक. तो वूशी एप्टेक एक चाइनीज प्लेयर है, एक लॉन्जा करके भी है, बट हम वूशी की ज़्यादा बात करेंगे. तो वूशी एप्टेक की अगर हम एक बार प्रोजेक्ट पाइपलाइन देखें, तो दे हैव क्लोज टू 1000 प्रोजेक्ट्स. इसका मतलब क्या है कि देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली विल गो आउट, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा. पर जो प्रोजेक्ट जो मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं, तो इनका जो रेवेन्यू का पोटेंशियल है वो उसी टाइप से 10x के आसपास हो जाता है, जैसे वो फेज 3 और कमर्शलाइजेशन एंटर करता है. सो गाइस, दिस इज व्हाई दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल एंड इट्स अ नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल. जैसे हम वूशी फार्मा के फनल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. So guys, now we'll come to the business analysis of Syngene. So Syngene was established way back in 1993 as a contract research organization arm of Biocon.
तो सिंजीन वॉज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, इंडिया का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। एंड लास्ट अगर हम 20 ईयर्स का हिस्ट्री देखें सिंजीन का, तो द बिजनेस हैज स्केल्ड अप लाइक एनीथिंग। आई थिंक 2002 में दे हैड अ फैसिलिटी ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट एंड राइट नाउ दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1.9 million square feet. Facility wise they have scaled up like anything, and moreover they are catering to the top 8 pharmaceutical companies of the world. Out of 10 top 8 को ये already cater कर रहे हैं। एंड सिंजीन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू फार्मास्यूटिकल क्रैम्स और CDMO, they are also like supplying services to other industries as well, like animal health care, like your consumer health, and moreover your FMCG. तो यहाँ पे इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो दे हैव क्लाइंट लाइक Zoetis, Unilever, Amgen, Baxter, BMS, राइट। सो दे हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एंड आज इनका टोटल अगर हम क्लाइंट का बेस देखते हैं, even in the last 5 years the client base has risen from somewhere 250 to 256 odd clients to 362 clients currently, and this has been increasing over the past many years, right? So what Syngene has to do, or what we investors have to look for in this business is कि कितना client win हो रहा है और कितना client mining हो रहा है। Before we proceed, so I would like to tell you that Syngene has 4 business segments. And moreover, way back in 2002, Syngene had an employee base of only 100 people. But in 2020, if we just fast forward, so Syngene has an employee base of 5,000 people. So that is nearly a 50x jump in the employee base. तो ये like fact देख के मेरे को वॉरेन बफेट की बात याद आती है, but Warren Buffett keeps on saying that a business is a dynamic picture. It keeps on moving. It's not a static movie, right? It's not a static picture basically. तो business also keeps on evolving. तो हम Syngene के केस में हमने देखा last 18 years में employee base has multiplied by 50x. So guys, Syngene basically has 3 business segments. What are those business segments? Those business segments are namely discovery business, second is your dedicated R&D centers, and third is your development and manufacturing services. But before I start talking about the business segments, I would like you to understand how Syngene generates revenue, or for a matter of fact कोई भी contract research organization world में revenue कैसे generate करती है। So basically there are 3 models of generating revenue. So first model of generating revenue is full-time equivalent basis. Second model is fee for service, and third model is equity for service. तो Syngene इक्विटी फॉर सर्विस में नहीं आती, जो इनके पेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इक्विटी फॉर सर्विस भी करते हैं, बट Syngene उसके अंदर नहीं है। Syngene इज इन द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल, दैट इज योर फुल टाइम इक्विवेलेंट एंड सेकंड इज योर फी फॉर सर्विस। तो फुल टाइम इक्विवेलेंट इज बेसिकली लाइक योर IT हेडकाउंट बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी अगर ग्लोबल इनोवेटर है तो जो द ग्लोबल इनोवेटर वुड हायर Syngene साइंटिस्ट टू डू देयर R&D वर्क, एंड ये जो Syngene का साइंटिस्ट हायर होएगा दैट विल ऑल्सो बी हायर्ड इन Syngene's ओन लैब, अपनी Syngene की लैब के अंदर ही वो काम करेंगे। एंड मोर ओवर हेयर द रिन्यूअल्स आर डन एनुअली, एंड समटाइम्स समटाइम्स द रिन्यूअल्स हैपन इन 3 years बेसिस, 3 year कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं यहाँ पे। Second is your fee for service model. Suppose there is a global innovator and he is doing R&D in his own lab, बट उसमें एक प्रोजेक्ट है विच दे आर प्लानिंग टू आउटसोर्स टू Syngene। तो उस प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन अगर 15-20 डेज है, या प्रोजेक्ट बहुत छोटे स्केल का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए Syngene कैन चार्ज फी फॉर सर्विस। So these are the 2 major revenue generating capabilities of Syngene. So coming back to the business segments, so let's start with the discovery business. So today discovery business of Syngene is close to 31 to 32% of the sales, and discovery business में Syngene provides all the services of discovering a molecule, जिसकी हमने पहले बात करी थी, टारगेट वैलिडेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इन सब की सर्विस Syngene प्रोवाइड करता है। And moreover, Syngene is not only into chemical discovery, they are also into the discovery of biologics. So biology and chemistry दोनों की discovery services में Syngene काम कर रहा है। And moreover, over here, if we look in the discovery business, Syngene has marquee clients like Merck, GSK, जिनका इन्होंने recently contract win करा है। तो guys, something like this happens in the discovery business. तो कभी कभी क्या होता है, they start with very menial services, जो fee for service ये छोटी छोटी start करते हैं, छोटे छोटे projects पे start करते हैं, and those fee for services business eventually scale up to full time equivalent, तो जैसे Merck के साथ इनका recently हुआ है। एंड जब हम डेडिकेटेड R&D सेंटर पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि और कैसे एवोल्यूशन होती है। तो डिस्कवरी बिजनेस के अंदर दे ऑल्सो हैव बायो इन्फॉर्मेटिक केपेबिलिटीज। अब बायो इन्फॉर्मेटिक केपेबिलिटीज क्या है? बेसिकली इफ अ साइंटिस्ट इज सर्चिंग फॉर कंपाउंड्स टू कॉम्बैट अ डिजीज इन द लैब,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है. To analyze the data, they have acquired a few companies based out of Bangalore. तो वहाँ से वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो सर्विस है वो यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो भी डेटा का एनालिटिक्स है, जो भी कंपाउंड्स का एनालिटिक्स है, दीज आर डन बाय बायो इन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज. Moreover, in the biologic segment, in the biology segment, they also have antiviral testing capability. तो क्या होता है, हमने बायोलॉजिक्स पढ़ा था कि माइक्रोब्स आर इंसर्टेड इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी और वीकेंड फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स आर इंसर्टेड. if those microbes have some kind of a virus inside them, so the entire project gets derailed. So antiviral facility is basically meant to test the virus if there is any in the microbes itself. So this is also an added capability in Syngene's platform, and moreover they also possess other kind of technologies and other kind of research and capabilities to provide services to the global innovators. So this is what Syngene does in the discovery business. In the development and manufacturing business, which is 37% of the sales, so they basically Syngene provides like development services and manufacturing services. So development mein they provide preclinical services for phase 1 trials, phase 2 trials and phase 3 trials. And moreover preclinical services are mostly done for fee for service basis. So discovery business में they work on a full time equivalent basis majorly, and जो development business में they also work on fee for service basis. तो guys यहाँ पे एक बहुत interesting development हो रही है इनके development business में. तो in 2018 Syngene entered into manufacturing of biologics, right? तो इन्होंने biologics manufacturing capacity लगाई थी. And moreover इनका अगर हम capex देखें तो they are coming up with a API plant at Bangalore. So this plant they are spending close to $100 million. So basically 600 to 700 crores के बीच में they are spending the amount, and this plant is already commercialized, but it will receive all the regulatory clearances in 2021. So just think about this. What Syngene is effectively doing right now, it is transitioning from a contract research organization to a contract research and manufacturing services. माने CRO से सिर्फ रिसर्च प्रोवाइड करने से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर कर रहा है अभी. एंड 2018 में दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ प्लांट ऑफ बायोलॉजिक्स, एंड 2020 में API का प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा है. Moreover, over here in this business, what is also interesting is just look at the kind of clients they have. So recently they won a client by the name of Zoetis. तो Zoetis के साथ development and manufacturing का multi-year deal was agreed. And Zoetis is the world's largest or one of the largest animal health manufacturers in the world. तो animal health की जो APIs and medicines है, Zoetis is one of the largest manufacturers. This is the kind of client Syngene has. तो manufacturing services makes a lot of sense, because अगर हम WuXi AppTec को देखें जो इनका चाइनीज पेयर है, so even they started off as a contract research organization. तो पहले सिर्फ रिसर्च प्रोवाइड करते थे, एंड धीरे धीरे फ्रॉम रिसर्च इवन WuXi AppTec entered into contract research and manufacturing services. तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी WuXi slowly entered, because what happens is that you can actually provide a purely integrated platform. तो लेट्स जस्ट सी. तो Syngene के पास आज 362 क्लाइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपका कोई क्लाइंट है एंड उस क्लाइंट का अगर आपने मॉलिक्यूल उनके साथ डिस्कवर करा है, तो यू आर द वन हु गेट्स टू डेवलप द मॉलिक्यूल, राइट? अगर आपके साथ ही, अगर आप क्रैम्स प्लेयर हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ ही उन्होंने मॉलिक्यूल की डेवलपमेंट करी है एंड आपके साथ ही वो मॉलिक्यूल की कमर्शलाइजेशन स्टेज तक आया है, तो इट इज़ वेरी हाईली प्रोबेबिलिस्टिक कि वो आपके साथ ही मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, बिकॉज इवन द क्लाइंट वांट्स टू रिड्यूस हिज लीड टाइम टू द मार्केट, एंड मोर ओवर सिंस यू हैव द डोमेन नॉलेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इटसेल्फ, क्योंकि आपके साथ ही डिस्कवरी हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था एंड कमर्शलाइजेशन हुआ था, so there is a very high probability that it will be also manufactured with you. So recently the same thing happened, and this gives us indication that this is actually becoming a platform business. So recently क्या हुआ था, so they got a contract from a Japanese MNC, and Japanese MNC के साथ इन्होंने क्या करा था, basically these were Syngene was the one who discovered the molecule with them. Then Syngene was the one who developed the molecule with them, and Syngene was the one who commercialized the molecule with them. And अब जब marketing का जब आया है, जब when the molecule is about to be launched in the market, Syngene is the one who got the contract for the new chemical entity. So guys, this is what the grand strategy is. कि हम रिसर्च भी हम करेंगे आपके लिए, डिस्कवरी भी हम करेंगे, डेवलपमेंट भी हम करेंगे आपके लिए,
एंड मोर ओवर मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे आपके लिए. सो दिस इज वाई इट इज अ प्योरली वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस business. So coming to the third segment of Syngene's business, this third segment is basically dedicated R&D business, dedicated R&D centers. So this constitutes close to 31% of the sales. So in this business, they have basically four major clients. So first client is Amgen, and Amgen के साथ they like Amgen has hired close to 170 scientists. So basically full time equivalent business model है. Baxter के साथ 200 scientists है. Bristol Myers Squibb के साथ, which is their oldest partnership, they have 550 scientists on full-time equivalent basis, and with Herbalife they have close to 8 scientists. So basically what happens in this business is full-time equivalent basis or a dedicated R&D basis. So Syngene has a lot of old customer relationships, and इस old customer relationships को how do they start? They start by fee for service. जैसे Amgen के साथ they started business with fee for service business. What happened over the years was, since Amgen really liked the services provided by Syngene, that fee for service business or small projects here or there converted into a dedicated R&D center. So this is like your foot in the door technique. You start with a very small business, and once you provide a very good quality service, that converts into a dedicated R&D center. तो foot in the door technique इनका दूसरे business में भी लगता है जहाँ पे integrated platform है, और इस वाले business में भी लगता है. So this is a very unique insight into Syngene's business model. And recently with Amgen, they have expanded their capacity from 25,000 square feet to 60,000 square feet. And they have also expanded their scientists from 100 to 170 scientists. And what is the revenue model over here? Basically again full-time equivalent basis, जो आपका IT business है. तो बेसिकली आपने Syngene has hired a scientist who's working in the lab for Amgen, and Amgen is paying Syngene indirectly for the scientist, because these contracts are renewable monthly, yearly or 3-year period. But in dedicated R&D, these are generally long-term contracts for 6 years. So recently they have also expanded their contracts with Bristol Myers and Squibb, which was supposed to expire, but वो 2024 तक इन्होंने कर दिया है. And even with the other customers, they have expanded their contracts. This concludes our business segments of Syngene's business model. But before I go towards the financials, there is a very interesting thing which you need to know, right? So what is this interesting thing? Is basically the CRAMS of biologics. तो आज Syngene क्या कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में? Syngene has installed bioreactors. So now you'll ask, what are bioreactors? So basically there are two kinds of reactor. One is steel reactor and the other is bioreactor. So bioreactor is basically more modern technology as compared to a steel reactor, and bioreactors are basically have lesser turnaround time, मतलब जल्दी काम हो जाता है, and moreover they do not get contaminated. अब बायोरिएक्टर का पर्पस क्या है? बिकॉज Syngene नीड्स टू हैव मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑफ बायोलॉजिक्स. हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था कि बायोलॉजिक्स का ग्रोथ ज्यादा आने वाला है फ्यूचर में. तो Syngene इज ऑलरेडी पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ बायोलॉजिक्स CRAMS प्लेयर. Now why is this interesting? Because if you want to invest in Syngene, or if you're looking at the business model, you need to understand this. So let's look at Samsung Biologics. Today Samsung Biologics is a biologics CRAMS player, and it trades at a valuation of price to sale multiple of 55 times. Now you would ask, why 55 times CRAMS player? इतना ज़्यादा क्या हो गया? Because the reason is in the nature of the business. Biologics business में switching cost बहुत ज़्यादा है. Once your cell lines are established, एक बार ये आपका सेल लाइन एस्टैब्लिश हो जाए, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू चेंज वेंडर्स. एंड विद दिस व्हाट Syngene has done, let's invert the question. जैसे Charlie Munger says, let's invert the equation. What Syngene has done, that Syngene has expanded its capability of discovery in biologics. Because in all probability, the discovery of your large molecules can go increase going forward. So what is happening is, क्योंकि आपके पास डिस्कवरी पे बेस्ट बायोलॉजिक्स टीम है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया जो बायोलॉजी की है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज अगेन वर्टिकल इंटीग्रेशन. Large molecules being discovered on your own platform, being developed at your own platform, because यहाँ पे switching cost ज़्यादा है, जैसे हमने अभी देखा. Because once your cell lines are established, they cannot be disturbed. Then again, they are being manufactured at your own platform. So this is what Syngene is doing, and in next decade or so, the biologics business size would increase definitely, because global R&D जो innovators है, उनके ही mix में biologics are increasing. So guys, with this we conclude the business analysis of Syngene, and now we'll talk about the financials.
So in terms of Warren Buffett's framework of a good, great and gruesome business, Syngene falls somewhere in the category of a good business. पर गुड बिजनेस के साथ साथ अगर हम इनका ROC देखें तो ROC हैज़ बीन मेंटेन बिटवीन 15 to 20%, क्योंकि आज हमें ROC इनका 17% के आसपास दिख रहा है बिकॉज इट इज आर्टिफिशियली डिप्रेस्ड. वाई इज इट आर्टिफिशियली डिप्रेस्ड? बिकॉज दे हैव रिसेंटली कमीशनड और कैपिटलाइज देयर प्लांट इन मैंगलोर. तो रिसेंटली इन्होंने मैंगलोर में अपनी फैसिलिटी कैपिटलाइज करी है एंड अभी उसका रेगुलेटरी चेक हो रहा है. तो मैंगलोर से कमर्शलाइजेशन वुड हैपन इन समवेयर अराउंड Q4 of 2021, मतलब Q4 क्या 2021 के एंडिंग में ही. एंड मोर ओवर वाई इज दिस इंपॉर्टेंट एज वेल इज बिकॉज यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है क्रैम्स के अंदर, यहाँ पे केपेक्स इज फ्रंट एंडेड, माने केपेक्स पहले करना पड़ता है और फैसिलिटी का जो यूटिलाइजेशन है दैट हैपन्स समवेयर बिटवीन 3 to 5 years. तो कैपेबिलिटीज हैव एक्सपैंडेड एंड इस वजह से ROC इस टाइम पे कम दिख रहा है क्योंकि कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ. तो नॉर्मलाइज ROC ऑफ दिस बिजनेस इज समवेयर क्लोज टू 22 to 25%. And what I like about this business is the runway of opportunity or size of opportunity, as Bharat Shah says, that this is again a small fish in a large pond. So over the years it has become a large fish in a large pond. So again, runway of opportunity is still humongous because in terms of revenue, Syngene wouldn't even be 1% of the entire CRO or CRAMS market in the world. So guys, valuation terms में this trades at a PE multiple of 50 to 56 times and price by cash flow, which is a more important indicator in my opinion, this trades at a multiple of 25 to 30 times. I won't be doing a DCF or a detailed DCF analysis because in terms of valuation the thing is clear. What the stock market is telling me that either you can take two bets. फर्स्ट बेट इज दैट सिंस दिस इज अ लंपी बिजनेस, क्योंकि क्रैम्स के अंदर लंपीनेस तो रहती है, तो यू ट्राई टू बाय दिस बिजनेस वेन एवर देर इज अ लाइक लंपीनेस इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स. Second thing is, today at these prices, this business is priced to perfection. So basically what the market is assuming that the execution would be impeccable, right? कि next decade में this company can emerge out as like really a behemoth in terms of CRAMS and CDMO player. So this is what the valuations are telling us. So our purpose at SOIC is not to tell you whether to buy or sell a stock, because our purpose here is to just educate you. And since we are talking about this, so we also need to talk about risk in the thesis. कि क्या risk हो सकता है thesis में जिससे ये valuation multiple collapse कर सकता है. Because इतने high valuation पे आप basically अगर इतना high multiple दे रहे हो तो you are basically assuming that this kind of growth is going to continue और basically the growth will accelerate. तो यहाँ पे chances भी वैसे काफ़ी हैं growth accelerate होने के, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एंड में इनका $550 million के आसपास इनका बेसिकली एसेट बेस हो जाएगा, समवेयर क्लोज टू 34 to 3500 crores. एंड मोर ओवर देयर एसेट टर्न्स आर 1. तो अगर 3500 crores का आपका एसेट बेस है और एसेट टर्न आपका 1 है, तो डैट इज परफेक्टली लाइक आपका जो रेवेन्यू है डैट विल ऑल्सो बी क्लोज टू 3500 to 4000 crores के बीच में. आई थिंक एसेट बेस वुड बी समवेयर क्लोज टू 4000 crores के आसपास, राइट? तो रेवेन्यूज गोइंग हेयर कैन डबल, लाइक इन नेक्स्ट 3 to 4 years द रेवेन्यूज कैन डबल एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैन बी इवन हायर. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क क्या है, कि ये वैल्यूएशन मल्टीपल को कौन सा रिस्क लाइक बेसिकली रिस्क कैन पंचर दिस वैल्यूएशन मल्टीपल. सो देयर आर 3 or 4 रिस्क इन दिस बिजनेस मॉडल. द बिगेस्ट रिस्क इज द रेगुलेटरी रिस्क. अगर डीवीज लैब की तरह जो 2017 में उनको US FDA ऑब्जर्वेशन आया था, अगर सिंजीन की भी किसी फैसिलिटी में उनको बेसिकली FDA ऑब्जर्वेशन आ जाता है, उनको फैसिलिटी बेसिकली थोड़े टाइम के लिए बंद करनी पड़ सकती है, सो दिस वैल्यूएशन मल्टीपल कैन ईजिली कोलैप्स. Second thing is there is a client concentration risk. So Syngene today receives more than 10% of its revenues from 2 clients. कुछ 600-650 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 2 clients से ही आ रहा है, right? And third source of risk in this business model, the risk of fire, because since they are dealing in chemicals और pharmaceuticals, तो फायर का भी रिस्क हो सकता है. तो 2017 या 2018 में इनकी S2 नाम की एक फैसिलिटी थी बैंगलोर में, वहाँ पे आई थिंक सो फायर एक्सीडेंट भी हुआ था. So these are 3 or 4 major risks in this business, and last but not the least in terms of sources of risk is basically your regulatory risk. अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चेंज कर दे तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ रिस्क.
This is the business analysis of Syngene, and we'll also be coming out with two-part blog series on Syngene, which we have written as a story ki first part of the blog and second part. First part में we'll be discussing कि what is the narrative of the entire CRAMS industry. अगर आपको DV's laboratories समझना है, अगर आपको Laurus Labs समझना है, अगर आपको Hykel समझना है, अगर आपको Newland Labs समझना है, and Syngene समझना है, तो it's a must-read blog for you. And in the second part of the blog, we'll be just talking about Syngene. So guys, with this, we'll end the video. And before ending the video, I would like to leave you on a very short quote of Sanjay Bhattacharya, who says that risk is nothing but volatility in the cash flows. Thank you guys.